પાઠ પહેલો છે દયાલુ શિકારી. પાઠનો સાહિત્ય પ્રકાર છે ચિત્રપાઠ. બરાબર, તેની અંદર હરણની વાત કરવામાં આવી હતી. જંગલમાં હરણ છે એ ઘાસ ખાઈ રહ્યું હોય, ચરી રહ્યું હોય, એનું શાવક, એનું બચ્ચું એની સાથે હોય છે. તો સરસ મજાની વાર્તા આપણે જોઈ હતી. તો પાછા આપણે એના પ્રશ્ન દ્વારા પુનરાવર્તિત કરીએ, ફરી યાદ કરીએ. પહેલો પ્રશ્ન છે, હિરની કહાં ઘૂમ રહી थी? हिरनी એટલે હરણ ક્યાં ફરી રહી હતી? એ જંગલ में, तालाब के किनारे की खेत में? तो जंगल में साचो जवाब છે जंगल में घूम रही थी. हिरनी को मारने के लिए कौन आया था? હરણને મારવા માટે કોણ આવ્યું હતું? શેર આયા થા? નહીં. શિકારી? હા. તો બી સાચો જવાબ છે. ઘાયલ हिरनी को शिकारी कहाँ ले गया? ઘાયલ થયેલી જે હરણ, ઘાયલ થયેલું હરણ હતું એને શિકારી ક્યાં લઈ ગયો? અસ્પતાલ? હા, અસ્પતાલ. તો એ સાચો જવાબ છે. ચોથો પ્રશ્ન, शिकारी ने हिरनी को किससे घायल किया? તો કયા સાધનથી હરણને શિકારીએ ઘાયલ કર્યું? તીર से? નહીં. ગોલી से? તો હા, ગોલી से घायल किया. बी. पांचवा प्रश्न, हिरनी को शिकारी की गोली कहाँ लगी? ए टांग में, बी सर में, सी पेट में? તો ટાંગ में लगी थी गोली. મિત્રો, બીજો પ્રશ્ન જે છે એ ખાલી જગ્યાનો છે. તો ખાલી જગ્યા આ કોઈક વિદ્યાર્થીએ પહેલું પેજ આ સ્વાધ્યાય પોથીમાં પૂરી લીધેલું છે એટલે એના અક્ષર છે. તો જોઈએ પહેલી ખાલી જગ્યા. हिरनी अपने खाली जगह को ढूंढ रही थी? तो शावक. हिरनी अपने शावक को ढूंढ रही थी. शावक એટલે બચ્ચું. शिकारी हिरनी को खाली जगह के पास ले गया. जवाब છે अस्पताल. शिकारी के दिल में खाली जगह आ गई. शिकारी के दिल में दया आ गई. हिरन खाली जगह होता है? हिरन डरपोक होता है. प्रश्न 3 એમાં પહેલો પ્રશ્ન, हिरनी कैसा जानवर है? હરણ કેવું જાનવર છે? हिरनी डरपोक जानवर है. હરણ ડરપોક જાનવર છે. બીજો પ્રશ્ન, शिकारी को क्या देखकर दया आ गई? આમાં લખ્યું છે बच्चे को देखकर दया आ गई, પણ ખરેખર જવાબ થોડો અલગ છે. शिकारी को हिरनी के पास खड़े शावक को देखकर दया आ गई. हिरनी के पास खड़े शावक को देखकर दया आ गई એવો જવાબ આવશે. ત્રીજો પ્રશ્ન, हिरनी की क्या विशेषता है? હરણની શું વિશેષતા છે? हिरनी बहुत तेज दौड़ती है. હરણ ખૂબ ઝડપથી દોડે છે. પશુ પક્ષી का इलाज करने वाले को क्या कहते हैं? પશુ પક્ષીઓનો ઇલાજ કરે, દવા કરે તેને શું કહેવાય? तो पशु पक्षी का इलाज करने वाले को पशु चिकित्सक कहते हैं. पांचवा प्रश्न, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, चीता, घोड़ा, लोमड़ी, बंदर जैसे जानवर दिखने को मिलते हैं. હવે તમારી સ્વાધ્યાય પોથીના સીધા છઠ્ઠા પ્રશ્ન ઉપર આપણે આવી જઈશું, કારણ કે વચ્ચેના પ્રશ્ન છે એ ખૂબ મોટા છે અને એમાં સમય લાગે એમ છે, એટલે આપણે ઉપયોગી છે એની જ ચર્ચા કરીશું. પહેલો છે સ્વસ્થ. સ્વસ્થ એટલે તંદુરસ્ત. તો એનું વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? અસ્વસ્થ. જે તંદુરસ્ત ન હોય એને કહેવાય અસ્વસ્થ. બીજું છે બુરાઈ. બુરાઈ એટલે ખરાબ કરવું, કોઈ બીજાનું ખરાબ વિચારવું. તો એનું વિરુદ્ધાર્થી થશે ભલાઈ, કોઈનું સારું વિચારવું. ત્રીજું બહુત. બહુત એટલે ઝાઝું બધું, પણ એનું વિરુદ્ધાર્થી છે થોડા. ચોથો પ્રશ્ન છે ખુશ, પ્રસન્ન. તો એનું વિરુદ્ધાર્થી છે ના ખુશ. એવી જ રીતે શબ્દના વચન પરિવર્તિત કરવાના છે. એક વચન હોય તો એને બહુવચનમાં પરિવર્તન કરવાનું છે. પહેલું ગોલી, ગોલી, ગોળી. તો એનું બહુવચન છે ગોલિયા. બીજું છે જંગલ. તો જંગલનું બહુવચન પણ જંગલ જ રહેશે. ત્રીજું છે પૂડી. એનું બહુવચન થશે પૂડિયા. ચોથું રાની. તો રાનિયા. ડાલી, ડાલિયા. પત્તા, તો પત્તે. હવે એના પછીનો પ્રશ્ન છે આઠમો, શબ્દો કે લિંગ બદલીએ. સ્ત્રીલિંગ હોય
તો પુલ્લિંગ કરવાનું, અને પુલ્લિંગ હોય તો સ્ત્રીલિંગ કરવાનું. પણ અહીં આપેલ તમામ શબ્દ પુલ્લિંગમાં છે. પહેલું છે હિરણ, તો હરણ હોય તો એનું સ્ત્રીલિંગ છે હિરની. બીજું નાગ તો નાગિન, ઊંટ તો ઊંટની, મોર તો મોરની. આપણે જોયું ની લગાડવાથી પણ સ્ત્રીલિંગ થાય છે. હવે જોઈએ એના પછીનો પ્રશ્ન, એમાં સંજ્ઞા શોધવાની. સંજ્ઞા એટલે નામ. આપણે જોયેલું હતું સંજ્ઞા વિશે, તમે એક વિડીયો પણ અભ્યાસ કર્યો હતો, વિડીયો જોયો હતો. પહેલું છે અહમદાબાદ બડા શહેર હૈ, તો અહમદાબાદ છે એ નામ છે અને શહેર એ પણ નામ છે. તો બંને આપણે લખી લીધા છે. બીજો પ્રશ્ન, રાકેશ પડતા હે, તો રાકેશ છે એ નામ છે, પડતા હે એ તો ક્રિયા હે. ઠીક હે. ત્રીજો પ્રશ્ન, સેના કૂચ કરતી હે, તો સેના જે છે એ નામ છે, આથી આપણે લખ્યું સેના. ચોથું, ગાય હરી ઘાસ ખાતી હે, તો ગાય જે છે એ નામ છે, હરી એ નામ નથી, એ વિશેષણ છે, ઘાસ છે એ પાછું નામ છે. પાંચમો પ્રશ્ન, શિકારી કો દયા આ ગઈ, શિકારી નામ છે અને દયા એ પણ નામ છે. તો આ પ્રમાણે આપણે તમામ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. હવે બીજા પાઠમાં જે પ્રશ્ન અગત્યના છે તેની ચર્ચા કરીએ. બીજા પાઠનું નામ છે એક જગત એક લોક. સરસ મજાની કવિતા છે. આ કાવ્ય તમે બરાબર ફરીથી વાંચી લેજો, પાઠ્યપુસ્તક પાસે રાખજો, એટલે તમને પ્રશ્નો કેવા છે એની આપણે શું ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ પણ ખબર પડે. પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દ में से किस शब्द का अर्थ दुनिया होता है? નીચે આપેલા શબ્દમાંથી કયા શબ્દનો અર્થ દુનિયા એવો થાય છે? તો સાચો જવાબ છે જગ. જગ એટલે જગત, દુનિયા. બીજો પ્રશ્ન, સંસાર के सभी मनुष्य का जीवन किसकी कहानी है? સંસારના બધા મનુષ્યનો જીવન કેની કહાની છે? પ્રેમની, દુઃખની કે સુખ દુઃખની? તો કાવ્ય મુજબ બધાના જીવનની કહાની સુખ દુઃખની છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, સબકા જીવન કિસ સૂત્ર સે બંધા હૈ? બધાનું જીવન કેવા સૂત્રથી બંધાયેલું છે? એકતાથી, શાંતિથી કે પવિત્રતાથી? તો સાચો જવાબ છે એકતાથી. ચોથો પ્રશ્ન, હમારા સચ્ચા ધર્મ ક્યા હૈ? આપણો સાચો ધર્મ શું છે? તો એ સજ્જનતા, બી માનવતા, સી લોકપ્રિયતા. આ કાવ્ય મુજબ સાચો જવાબ છે માનવતા. પાંચમો પ્રશ્ન, हमारा राग कैसा होना चाहिए? એ સુહાના, ઊંચા યા ધીમા? તો સાચો જવાબ છે સુહાના. બીજો પ્રશ્ન જેની અંદર પણ ખાલી જગ્યા છે, આપણે પહેલા પ્રશ્નમાં પણ ખાલી જગ્યા આવી હતી. પહેલી ખાલી જગ્યા, હર્ષ ભરે ગાયે હમ રાગ સુહાને. જો આ તો કાવ્ય પંક્તિ છે, જેને કાવ્ય પંક્તિ આવડતી હશે, કવિતા મોઢે થઈ ગઈ હશે, એને આરામથી આવડશે, નહીતર તમારે યાદ રાખવું પડશે. એટલે કવિતા યાદ રાખવાની છે. બીજી ખાલી જગ્યા, ઘર ઘર મેં ગુંજ રહા નિષદિન યહ મધુર ગાન. નિષદિન એ ખાલી જગ્યામાં આવશે. ત્રીજું, રાષ્ટ્રો મેં એક્ય યહી કર્મ હમારા. ચોથું, હિલમિલ કે લહેરાએ વિશ્વ શાંતિ કા નિશાન. વિશ્વમાં શાંતિ થાય એવું આપણે હળીમળીને લહેરાવીએ. ત્રીજો પ્રશ્ન જે છે એની અંદર એક એક વાક્યમાં જવાબ લખવાના છે. આનું બની શકે કે આવા પ્રશ્નને પણ આપણે MCQ વિકલ્પમાં તૈયાર કરીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ, એક જગત એક लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो एक जगत एक लोक ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य, चंद्र, आकाश, धरती सब एक ही है, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है. दूसरा प्रश्न, एक रक्त का अर्थ समझाइए. एक रक्त એટલે શું? एक रक्त का अर्थ यह है कि सबके लहू का रंग लाल है. બધાના શરીરમાં જે લોહી છે એ લાલ રંગનું છે, એવું એક રક્તનો અર્થ થાય છે. ત્રીજું, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? આપણો ધર્મ શું હોવો જોઈએ? हमारा धर्म પ્રગતિ, દિવસે દિવસે પ્રગતિ થાય તો એ આપણો ધર્મ છે. તમે ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરો છો, બરાબર, તો એ ધર્મ છે. બીજું છે ન્યાય, સાચી વસ્તુ ઓળખતા શીખો, ખોટી વસ્તુને નકારતા શીખો, તો એ ન્યાય થયો. અને ત્રીજું છે માનવતા. તો આ ત્રણ વસ્તુ જે છે આપણો ધર્મ છે.
चौथा प्रश्न, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? आ काव्य में प्रकृति ना कया कया तत्व छे? तो सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश और हवा जैसे प्रकृति के तत्व इस काव्य में है। तो आ काव्य में आटला तत्व जे छे ए छे। पांचमो प्रश्न, काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? शा माटे आવું જ शीर्षक રાખવામાં આવ્યું એવો પ્રશ્ન છે। તો इस जगत में सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश और लोक आ बधी वस्तु छे ये एक ही है, एक ज छे, इसलिए कवि ने ऐसा शीर्षक रखा है। आ माटे कविए आ शीर्षक राख्યું છે। અહીંયા सीधा छठा प्रश्न ઉપર આવી જઈએ। समान प्रास वाले शब्द लिखिए। एक सरखो प्रास મળતો હોય એવા શબ્દ। सुनकर तो बोलकर, मेहरबान तो बागबान, सेठानी, जेठानी, आना, जाना। હવે પછીના શબ્દ છે એનો સમાનાર્થી કરવાનો છે અને એનો વાક્યમાં પ્રયોગ પણ કરવાનો છે। વાક્યમાં એ સમાનાર્થી શબ્દ આવવો જોઈએ। પેલો છે હાથ। હાથને કહેવાય પાણી અથવા હસ્ત। પાણીનું વાક્ય આપણે બનાવીએ। સીતાને પાણી સે પાણી પિયા, એટલે સીતાએ હાથથી પાણી પીધું। પાણી સે પાણી પિયા। બીજું છે માન। એનું સમાનાર્થી सम्मान। वाक्य में प्रयोग करिए तो જોઈએ, भारत के लोग नारी का सम्मान करते हैं। भारतना लोग नारी नु सम्मान करे छे। त्रीजू अंबर। अंबर एटले आकाश। आकाश में काले काले बादल छा गए। चौथू निशान एटले चिन्ह, संज्ञा। एनु वाक्य बनावीए, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। चिन्हनु आपणे वाक्य बनाव्યું। પછી આઠમો પ્રશ્ન છે વિલોમ શબ્દ लिखिए। विलोम एटले विरुद्धार्थी शब्द लखो। पेलू जीवन। जीवन एनु विरुद्धार्थी मृत्यु अथवा मरण। शुभ तो अशुभ। जड़। जड़ एटले सजीव, सॉरी जड़ एटले निर्जीव, तो एनु विरुद्धार्थी थशे चेतन। चेतन एटले सजीव। चौथो छे स्वामी। स्वामी नु विरुद्धार्थी छे दास, नौकर। नवमो प्रश्न, विराम चिन्ह लगाकर निम्नलिखित वाक्य फिर से लिखिए। विराम चिन्ह लगावता तमने गया वर्षे आवड़तुं हतुं। આપણે ઘણી બધી ગુજરાતીમાં અને હિન્દીમાં તમને મહાવરા આપ્યા હતા, પ્રેક્ટિસ કરવા માટે આપી હતી, એટલે તમને સરળ રહેશે। છતાં આપણે વાત કરીએ, छी छी तुमने यह क्या किया? तो छी छी तुमने यह क्या किया એમાં પ્રશ્ન જે છે છેલ્લે પ્રશ્ન પૂછાયેલ હોવાથી છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે। અરે तुम नहीं गए? तो अरे એ આશ્ચર્ય થયું, તો એના પછી આશ્ચર્ય ચિહ્ન મૂક્યું। અને तुम नहीं गए તો એ પ્રશ્ન થયો, તો એના પછી પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન આપણે મૂક્યું છે। ત્રીજું, मनोज स्कूल नहीं गया। तो मनोज स्कूल नहीं गया આમાં કોઈ બીજું કંઈ વિશેષતા, આશ્ચર્ય નથી, પ્રશ્ન નથી, ખાલી કીધેલું છે। તો આમ જે કહ્યું હોય વાક્ય કહેવા ખાતર એમાં પૂર્ણવિરામ આવે। तुम्हारा नाम क्या है? तो आ तो स्वाभाविक प्रश्न है, तो आनी पाछळ प्रश्नार्थ चिन्ह लागशे। पांचमू, जीवन में सुख दुख तो आते ही है। आमा पण खाली वाक्य कहेवायुं छे, बराबर, एटले जीवन में सुख दुख तो आवे छे, तो एमां आवशे पूर्ण विराम। पहला प्रश्ननी अंदर आपवाना छे। पहलो प्रश्न छे, डंक मारना किसका स्वभाव है? डंक मारवानो स्वभाव कोनो छे? नन्ही का, बिच्छू का, मोर का या तितली का? साचो जवाब छे बी, बिच्छू का। बीजो प्रश्न, बिच्छू को क्या सूझी? युक्ति, मनमानी, शैतानी या कल्पना? तो आनो जवाब छे शैतानी। बिच्छू को शैतानी सूझी, सी। त्रीजू, बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? बिच्छुए कोनी बात न सांभળી હોય એવી કરી દીધી? माँ की, पिता की, मित्र की या नन्ही की? आनो जवाब छे नन्ही की। नन्हीनी बातने अनसुनी कर दी थी। चौथो, स्वभाव शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? स्वभाव शब्दनो समानार्थी शू छे? प्रकृति, आदत, सुंदरता, सयाना? जवाब छे ए, प्रकृति। स्वभाव एटले प्रकृति। पांचमो प्रश्न, निम्नलिखित में से पानी में कौन नहीं रहता? पानी में कौन नहीं रहतुं? आमांथी मक्खी,
मक्खी पानी में रहती है? नहीं। हंस भी पानी में रहता है, बगुला भी रहता है, और बतख रहता है। हाँ, बतख भी रहता है। तो मक्खी सही जवाब है कि वह पानी में नहीं रहती। अब दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर विधान पूर्ति कीजिए। तो સાચો વિકલ્પ શોધી અને વિધાનની પૂર્તિ કરવાની છે, વાક્ય પૂર્તિ કરવાની છે। પહેલું, નન્હીને बिच्छू को बचाया क्योंकि, ત્રણ વિકલ્પ આપેલા છે। क्योंकि उसे बिच्छू पर दया आ गई, આ ત્રણમાંથી આ સાચો જવાબ છે। બીજું, नन्ही पीड़ा से तड़प उठी क्योंकि बिच्छू ने उसको डंक मारा था। પ્રશ્ન 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। અહીંયા કોઈ પણ જાતના વિકલ્પ આપેલા નથી, એટલે આ ખાલી જગ્યા યાદ પણ રાખવાની છે। ચાલો જોઈએ પહેલી ખાલી જગ્યા। नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा हुआ देखा। जवाब छे दलदल, दलदल में फंसा हुआ देखा। बीजी खाली जगह, बिच्छू अपनी गंदी आदत का खाली जगह था। क्या था? गुलाम था। बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम था। तीसरा प्रश्न, नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह जीवन दान दिया। जवाब छे दोबारा। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। चौथो प्रश्न, खाली जगह करना नन्ही का स्वभाव था। तो जवाब छे भलाई, भलाई करना नन्ही का स्वभाव था। पांचमो प्रश्न, डंक मारना बिच्छू का खाली जगह था। डंक मारवो ए बिच्छूनो स्वभाव हतो। छठो प्रश्न, अब मैं किसी खाली जगह जीव को डंक नहीं मारूंगा। एमा जवाब आवशे निर्दोष। अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। विद्यार्थी मित्रों, एना पछी एक एक वाक्य में उत्तर आपवानो छे। हिंदी प्रश्न छे अने हिंदी में जवाब आपवानो छे। पहलू, नन्ही कौन थी? जवाब, नन्ही एक छोटी बतख थी। बीजो प्रश्न, बिच्छू कहाँ फंस गया था? जवाब, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीजो प्रश्न, नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने हमेशा भले काम करने का निश्चय किया। चौथो प्रश्न, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? जवाब, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है। डंक मारવો એ તો बिच्छूनी आदत है। पांचमो प्रश्न, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्हीए पोताना स्वभाव विषे शुं कह्युं हतुं बिच्छूने? नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में कहा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। भलाई करवी ए मारो स्वभाव छे। कारण के आ बिच्छूनो खराब स्वभाव छे ने डंख मारवानो, तो मारो स्वभाव छे भलाई करवानो, सारू करवानो स्वभाव छे। एना पछीनो प्रश्न छे, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर कहाँ रखा? जवाब, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। सातमो प्रश्न, नन्ही का मन क्यों डोल गया? जवाब, बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, इसलिए नन्ही का मन डोल गया। आठवां प्रश्न, समझदार नन्ही कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो लेखक का नाम क्या है? शंकर सुल्तानपुरी। पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे। समझदार नन्ही कहानी के लेखक शंकर सुल्तानपुरी है। अगला प्रश्न है जो है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। जो विस्तार से है तो वह बाद में देखेंगे। उसके बाद का प्रश्न है छठा प्रश्न, सही जोड़ मिलाइए। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिए, आप देख सकते हैं। बिच्छू कहता है, पहले में बिच्छू कहता है, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। दूसरा, नन्ही कहती है, भलाई करना मेरा स्वभाव है। तीसरा, नन्ही की माँ कहती है, भले लोग अपनी बार बार भलाई की आदत से बुरे लोगों का भला बनाने की राह दिखाते हैं। એટલે જે સારા લોકો છે એ પોતાની સારી આદતથી ખરાબ લોકોને
સારા બનાવવાનો રસ્તો દેખાડે છે। 7મો પ્રશ્ન છે कि निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा है और क्यों कहा, यह विधान लिखिए। आ वाक्य कोने कोने કહ્યું છે એ લખવાનું છે। माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूंगी, यह विधान किसने कहा है? तो यह विधान नन्ही बतख ने अपनी माँ को कहा है। दूसरा वाक्य, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है, यह विधान किसने कहा है? यह विधान बिच्छू ने नन्ही से कहा है। तीसरा, भलाई करना मेरा स्वभाव है, यह विधान किसने कहा है? यह विधान नन्ही ने बिच्छू को कहा है। चौथा प्रश्न, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा, यह विधान बिच्छू ने नन्ही को कहा है कि मैं निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारूंगा। 8मो प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावराना अर्थ देवाना है, वाक्य प्रयोग करवानो है। पहलो प्रश्न, वचन देना। वचन देना मतलब होता है वादा करना। बिच्छू ने निर्दोष जीव को डंक न मारने का वचन दिया। दूसरा प्रश्न, मन डोलना। मन डोलना उसका अर्थ होता है विचार बदलना। नन्ही को देखकर बिच्छू का मन डोलने लगा। तीसरा प्रश्न है शर्म से पानी पानी होना। शर्म से पानी पानी होने का मतलब है बहुत लज्जित होना। वाक्य प्रयोग देखेंगे, बिच्छू नन्ही के सामने शर्म से पानी पानी हो गया। इसी प्रकार अगला प्रश्न है राह दिखाना। राह दिखाने का मतलब है रास्ता दिखाना। नन्ही ने बिच्छू को सही राह दिखाई। एना पछीनो 9मो प्रश्न, निम्नलिखित शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखिए। शब्द समूह माटे एक शब्द आपवानो छे। पहला, जिसमें कोई दोष न हो, उसका अर्थ क्या होता है? जिसमें कोई दोष न हो, जेनामां कोई पण दोष न होय। तो एना माटे शब्द समूह माटे एक शब्द छे निर्दोष। जिसमें कोई दोष न हो वह है निर्दोष। दूसरा, नया जीवन देना। नया जीवन देना उसके लिए है नवजीवन। तीसरा, दूसरे का भला करने वाला। दूसरे का भला करने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं? परोपकारी। क्या कहते हैं? परोपकारी। इसी प्रकार 10वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द लिखिए। पहला शब्द है निर्दोष। निर्दोष को कहते हैं बेकसूर। दूसरा शब्द है रास्ता, उसके लिए शब्द है राह। तीसरा शब्द है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है आराधना। चौथा प्रश्न है प्रसन्न। प्रसन्न यानी कि खुश। 5वां प्रश्न दुख। दुख अर्थात पीड़ा। 6ठा प्रश्न स्थान। स्थान का अर्थ है जगह। 7वां प्रश्न सहसा। सहसा यानी कि एकाएक। 8वां प्रश्न है मुसीबत। मुसीबत अर्थात मुश्किली। तो हमने सारे समानार्थी शब्द देख लिए। अब हम विरुद्धार्थी शब्द देखेंगे। पहला विरुद्धार्थी शब्द है सूखा। उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? सूखा शब्द का विरुद्धार्थी सूखा एटले सुकाई गेलू। तो एनु विरुद्धार्थी छे गीला। गीला एटले भीनु। एवी ज रीते बीजू भलाई। भलाई का विरुद्धार्थी है बुराई। तीसरा है मित्र, उसका विरुद्धार्थी है शत्रु। चौथा शब्द है सुख। सुख का विरुद्धार्थी होगा दुख। 5वां शब्द है समझदार। समझदार का विरुद्धार्थी होगा नासमझ। 6ठा शब्द है सुनी। सुनी का विरुद्धार्थी होगा अनसुनी। 7वां शब्द है परवाह। उनका विरुद्धार्थी होगा बेपरवाह। 8वां शब्द है सरल, तो उनका विरुद्धार्थी है कठिन। इसी प्रकार 12वां प्रश्न देखेंगे तो निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। वचन बदलाववाना छे। एक वचन होय तो बहुवचन करवानुं छे, बहुवचन होय तो एक वचन करवानुं छे। पण अहींया तमने बधा ज शब्द छे ए एक वचનમાં આપેલા છે અને આપણે बहुवचનમાં કરવાના છે। પહેલો શબ્દ છે બાત, તો એનું बहुवचन થશે બાતે। એવી રીતે જોડણીનું ખાસ ધ્યાન રાખજો, બાતેમાં જે તેની ઉપર છે અનુસ્વાર આવે છે। બીજો શબ્દ છે ખુશી, તો ખુશી દીર્ઘ છે, બરોબર। સી જોશો તો તમે દીર્ઘ જોશો, તો
જ્યારે બહુવચન કરીએ છીએ ત્યારે આગળનું બહુવચન કરતી વખતે એ દીર્ઘ છે એ રસ્વ થઈ જશે. ખુશી હતું તો ખુશિયા થઈ ગયું, બરાબર. સી છે એ રસ્વ થઈ ગયો. પછી રાની તો રાનિયા, किताब तो किताबें, बहन तो बहने, घटना घटनाएं। इसी प्रकार हम बहुवचन कर सकते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो यह कल ही हमने विराम चिन्ह का वीडियो देखा था, तो विराम चिन्ह अपने आप करना है। अगर नहीं आता तो मैंने आपको फोटो भेज दिया है, उसमें से देखकर आप लिख सकते हैं। अगला 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द ढूंढकर लिखिए। सर्वनाम ढूंढना है तो सर्वनाम कोने कहेवाय पहला ये समझी लईए। जे नामनी बदले वपराय एने सर्वनाम कहेवाय। अहीं पहलू वाक्य है, आप कहाँ जाते हैं, तो इसमें आप जो है वह सर्वनाम है। तमे क्या जाओ छो तो एमां तमे ए सर्वनाम है। आप कहाँ जाते हैं उसमें है आप, वह सर्वनाम है। दूसरा वाक्य, मैं एक सामान्य लड़का हूँ, तो उसमें मैं वह है सर्वनाम। तीसरा है, उसे तो बस रोना ही आता है, तो जो इसमें सर्वनाम है उसे एटले एने मात्र ने मात्र रोवानुं ज आवे छे। चौथुं, वह अपने आप खड़ा हो गया, तो उसमें सर्वनाम है वह। पांचवा, वे सत्य और अहिंसा के अवतार थे, उसमें जो सर्वनाम है वे। छठा, मैं आपका स्वागत करता हूँ, तो इस वाक्य में सर्वनाम है मैं। सातवां प्रश्न, उसे रोको जाने मत दो, तो उसमें उसे जो है वह सर्वनाम है। इसके बाद है शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो आपको शब्दकोश का क्रम पता है कि कैसे शब्दकोश के क्रम में शब्दों को लिखना है, तो यह आप अपने आप कीजिएगा।